नहीं, it's on. तो बार-बार वहाँ पे आ रहा है कि it is saved. कब होना चाहिए जब स्टॉप करे, तो इसलिए I thought. नहीं सर, कोई दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है, वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। नहीं, I have disabled all of you. No sir, you have taken the general today, so we all have the access, to be honest. I think you haven't made us attend these yet. I'll make this. Please make them attend. Just a minute. Yes sir, because the recordings may or may not be useful. Actually will be useful. So. Just a minute. Sudden side. Just a minute. Okay, let's start again. दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. Just a minute. Okay, fine. Okay, fine. See, MODI method is an iterative method in which an initial basic feasible solution can be used as an input. Okay. So if we give that input to the process, we get an improved solution. Okay. Now that improved solution may or may not be optimum. Okay. If it is not, if it is optimum, then we'll stop the procedure. Okay. If it is not optimum means what? It is the best possible solution. Fine. Now, if it is not optimum, it indicates that there is a scope of improvement. So we'll again put that improved solution in the process and we further improve it. Okay. And we continue this process until we get an optimum solution. Fine. Okay. So if you start at VAMP, then obviously you will reach the finish line at earliest. Okay. So it's better to use initial solution obtained by VAMP as an input for the MODI process. Okay, MODI process. Fine. So let's discuss this process with the help of one example. Now this is a 3x4 transportation problem, okay, where cost of transportations are 19, 7, 3, 21, etc. Now, though the solution obtained by Northwest Corner method is not advisable, but for the demonstration purpose, I have used this solution as an input for the modified distribution algorithm. Okay. Now, at this moment, the total cost of transportation is rupees 11,500. Okay. I request you, all of you, to note down this cost. Okay. Now, we'll start with the modified distribution method. Now, the first step of the modified distribution method is to find to solve a system of linear equations Cij equals to Ui plus Vj. Okay, and we'll solve the system of linear equation for allocated cells. Now, in this case, Js, then Ss, Sn, Sp, etc. These are allocated cells and remaining are non-allocated cells. Okay, so here we have multiple equations satisfying this condition. So for each allocated cell will form an equation. Okay, for example, this is the C11. Okay, Js is your allocated cells, which is in the first row and in the first column. So the counter for this, I counter for this cell is 1 and J counter is also 1. Okay, so this is nothing but your C11 cell. Okay. Now for C11, so I counter is row or column, sir? Row.
रो फर्स्ट रो के लिए C1 C2 C3 C4 रहेगा. सेकेंड रो के लिए क्या होगा? C2 C21 C22 C23 C24. देन थर्ड रो के लिए C31 C32 C33 C34. फाइन. तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? C11 equals to U1 plus V1. Now what is U1? U1 is called as row values. Okay, तो हम यहाँ पे U1 की वैल्यू लिखेंगे. Okay, on the extreme right side, that too in front of first row. Okay, so at this position we'll write the value of U1. Similarly, value of U2 हम यहाँ पे लिखेंगे, value of U3 हम यहाँ पे लिखेंगे. Okay, V1 are the column values, V1, V2, V3, etc. are column values. So V1 हम यहाँ पे लिखेंगे bottom पे, right? V1 will write over here, V2 will write over here, V3 and V4. Okay, and we'll write the system of linear equation for allocated cells. Okay, अब first method में हम क्या करेंगे? First example में I'll request all of you to write equations. तो पहला equation क्या बनेगा? U1 plus V1 should be equals to 19. Okay, this is your first equation. U1 plus V1 equals to 19. Now for this cell, for SS, for cell SS, इसके लिए क्या होगा? U2 plus V1 equals to 15. Okay. Then for SN cell, it would be U2 plus V2 equals to 21. Then next equation is U3 plus, not U3, U2 plus V3 equals to 18. Okay. For this cell, it would be U3 plus V3 equals to 15. And for this cell, it would be U3 plus V4 equals to 22. Okay. Now, once we write these 6 equations, okay, that set of equations is called a system of linear equations. Then we'll solve those linear equations. Solve करना है मतलब क्या करना है? We'll find the values of ui and vj that satisfy all the equations. Okay. अब इतना बड़ा system solve करना comparatively difficult है. So what we'll do? We'll assign or we'll assume that u1 equals to 0. You can assign any number as a u1. u1 may be 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो, but 0 लेना comparatively easy है. Okay. So अगर हम u1 equal to 0 लेंगे, okay, if I take u1 equal to 0, then first equation क्या है आपका? u1 plus v1 equals to 19. Okay. So if we solve that equation, we'll get value of v1 as 19. Okay. See u1 आपका यहाँ पे 0 आ गया. Fine. u1 0 आ गया. What is v1? v1 right hand side is 19. So u1 is 0. If we substitute value of u1 in first equation, we'll get value of v1. Now we'll use the value of v1 to solve second equation. Second equation में वो value हम substitute करेंगे. Okay, fine. Now what is second equation? Second equation is u2 plus v1 equals to 15. Okay, so if we put this value of v1 in this equation, what we get? 15 equals to u2 plus 19. So after solving this, we'll get value of u2 as minus 4. Then we'll use this value. Sir, हाँ, U2 में 4 क्यों लिया सर आपने? U2 कैलकुलेट किया ना मैंने. देखो यहाँ पे 15 लिया था, राइट हैंड साइड 15 है. सेकंड इक्वेशन तुम्हारा क्या लिखा था? तुमने लिखा था क्या नहीं इक्वेशन सबने? हाँ. इक्वेशन लिखे थे ना. सेकंड इक्वेशन, व्हाट वाज सेकंड इक्वेशन? 15 इक्वल्स टू u2 plus 19. Okay, 19 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है v1 की वैल्यू, राइट? So if I substitute value of v1 over here, then I'll get equation 15 equals to u2 plus 19. So if I transpose this 19 to left hand side, I'll get u2 equals to 15 minus 19, which is equal to minus 4. So ये वैल्यू आ गई minus 4 इसकी. अब इस रो में आपको देखना है
इस रो में आपके दो एलोकेटेड सेल्स है. रिमेंबर वी आर सॉल्विंग दिस सिस्टम फॉर एलोकेटेड सेल्स ओनली, राइट? तो विल यूज दिस वैल्यू टू फाइंड. इस रो में देखो दो एलोकेटेड सेल्स है, तो वी कैन फाइंड value of V2 as well as value of V3 using value of V2. Value of U2. Okay. So value of U2 V2 क्या आएगी? 25. हाँ, 25. Similarly, value of V3 will be say 18 equals to U2 plus V3. So अगर ये आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे 18 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, that is 22. Okay. एक बार ये वैल्यू मिल गया आपको V3 की, then using V3 you can find value of U3. Okay, because ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 15. Now my value of V3 is 22, so 22 plus U3 equals to 15. So U3 must be equal to -7. And once this -7 is obtained, we can use this value to find V4. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे वैल्यू निकालने? हेलो हेलो. हाँ, सी यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए. रिमेम्बर ये बिफोर स्टार्टिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड one thing need to be checked. I explained you yesterday that modified distribution method can be applied only if the initial solution is a basic feasible solution. And what does it mean? A solution is said to be basic feasible solution if the number of allocated cells should be equals to number of allocated cells is equal to m plus n minus 1. Okay, where m is the number of rows and n is the number of columns. Okay. Now in this case we have 3 rows, 1, 2, 3 and 4 columns. Okay, so m plus n minus 1 is what? 3 plus 4 minus 1, that is 6. Okay, and number of allocated cells is also equals to 6. Okay, so this solution can be applied modified distribution method can be applied on this solution because this is an initial basic feasible solution. Okay, अगर नहीं होता है तो क्या करना है? That we'll discuss afterwards. Okay. Such situation, such solution is called as degenerate. Okay, so we have to resolve degeneracy. वो कैसे करना है? That we'll discuss afterwards. पहले हम focus करते हैं on the algorithm. Okay. Modi method algorithm. Fine. यहाँ तक सब क्लियर हो गया? Now, see, in total there are how many opportunities? 12 opportunities. Okay. Now, out of 12 opportunities, we have used 6 opportunities, right? See, total number of cells is 12. मतलब 12 opportunities है. Okay. उसमें से 6 allocated है. मतलब हमने 6 opportunities use किए. And we are not using remaining 6 opportunities. Okay, so to test the optimality of the solution, what we'll do, we'll find the opportunity cost for non-allocated cells. Okay, and that is denoted by Dij value. Okay, अब Dij कैसे कैलकुलेट करना है? रिमेंबर पहला जो स्टेप हमने किया था वो स्टेप चाहे तो लिख लो. Will calculate row values and column values. Row values are denoted by U1, U2, U3, etc. Column values are denoted by V1, V2, V3, V4, etc. Okay. Now to calculate the row values and column values, we'll solve the system of linear equation Ui plus Vj equals to Cij. That too for allocated cells. Okay. अब नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए क्या होना चाहिए? Now for non-allocated cells, we'll calculate the Dij values. Okay, and the formula for Dij is Cij minus sum of Ui plus Vj. Okay, for example, in the first row, Jn is empty cell.
Okay, JP, then JM, all are empty cells. Now to calculate Dij value of JN cell, हम क्या करेंगे? What is Cij for this cell? Cij for this cell is 7. Okay, so we'll put 7 over formula minus sum of these two, मतलब U1 and corresponding V value क्या है? 25. So 0 plus 25 is 25. So we'll subtract 25 from this 7. Okay, कैसे कैलकुलेट करना है? See, and we'll write. Sir, repeat again, sir. Okay. See, अब यहाँ पे कितने नॉन एम्प्टी सेल्स है? 1. JN is a non-empty cell, JP is another non-empty cell, JM, then TS and TN. These are empty cells. Okay. Now for each of these empty cells, we will calculate the opportunity cost. Okay. Opportunity, and the formula for opportunity cost is Dij value, Dij equals to Cij minus Ui plus Vj. अब let's focus on JN cell. Okay, JN cell की Cij value क्या है? 7. Okay, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 7. उसकी Ui value क्या है? 0. And Vj value is 25. Vj मतलब column value and Ui मतलब row value. Okay, so row value and column value का addition करके आपको Cij से वो subtract करना है. Okay, मतलब ये इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? Dij इक्वल्स टू 7 माइनस इनसाइड ब्रैकेट 0 प्लस 25. तो 7 माइनस 25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 18. ओके, सिमिलरली Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली विल कैलकुलेट फॉर नेक्स्ट एम्प्टी सेल, दैट इज JP. अब JP के लिए कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, तो JP के लिए क्या हो जाएगा? 3 minus हाँ 3 minus minus bracket ये 0 plus 22. हाँ, तो वो minus 19 आता है, right? हाँ, similarly we'll calculate for JM cell, then TS cell and TN cell. Okay, or one more is there, SM cell. Okay, so once we calculate Dij value, see opportunity cost मैंने कल भी explain किया था. What, sorry, not yesterday, day before yesterday. What is the significance of opportunity cost, or what does it signify? इसका मतलब क्या है कि basically opportunity cost is the cost of not using that particular opportunity. Okay, say for example JN, अगर हम here we are not using opportunity JN, okay, क्योंकि वहां पे हमने कुछ भी नहीं डाला है. So instead, if I put 1 unit in JN cell, my cost will be reduced by 18 rupees. Okay, जो यहाँ पे Dij cost दिख रहा है, usually we write Dij cost at lower left corner. Okay, यहीं पे लिखते हैं हम Dij value. Fine. Now इस सेल की Dij value क्या है? -18. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट डालता हूँ, if I put 1 unit over here, then my total cost of transportation will be reduced by 18 rupees. Similarly, the Dij value of JP cell is -19. So what does it signify? It means that if I put 1 unit over here, my total cost of transportation will decrease by 19 rupees. यहाँ पे कितना डिक्रीमेंट होगा? 8 rupees से 8 rupees per unit. यहाँ पे होगा 19 rupees per unit. यहाँ पे होगा 1 rupee per unit. यहाँ पे होगा 4 rupees per unit. Okay. See, अब यहाँ पे क्या आता है? My aim is to minimize the total transportation cost, and I can see there is a scope of improvement. See, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो मेरी कॉस्ट कम हो रही है. Similarly, if I put something over here, some unit over here, then my cost will be reduced in multiples of 19 rupees. Right? Okay. तो अभी एक स्टेप में हम क्या करेंगे? In one iteration, we'll select any one cell. अब कौन सा सेल्स चूज करना है? Okay, whether to choose JN or JP or JM or TS or SM.
SM यूज करोगे ना? हाँ, अभी देखो मैक्सिमम रिडक्शन मुझे यहाँ पे ऑफर कर रहा है. इनफैक्ट दीज टू सेल्स आर ऑफरिंग मैक्सिमम रिडक्शन. ओके, जेपी एंड जेएम. ओके, ये तो दोनों में JP यूज मुझे, करोगे. हाँ, तो जेपी भी यूज कर सकते हैं, जेएम भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में इक्वल रेट ऑफ रिडक्शन, दोनों सेल सेम रेट ऑफ रिडक्शन ऑफर कर रहे हैं, दैट टू मैक्सिमम वन. ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट द सेल विथ मोस्ट नेगेटिव डीआईजे वैल्यू. So here either you can choose JP or you can choose JM. Okay. Fine. Now let's suppose that I use JP for improvement purpose. Okay. Now if I put one unit over here, okay. Now note that the row capacity of source J is 100. सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, से 1 यूनिट, देन ये रो टोटल आपका बिगड़ जाएगा, 101 हो जाएगा, बट कैपेसिटी इज ओनली 100. करेक्ट? यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रो कंस्ट्रेंट एज वेल एज कॉलम कंस्ट्रेंट. ओके, सो अगर यहाँ पे मुझे डालना है कुछ, सो आई विल हैव टू टेक आउट सम यूनिट्स फ्रॉम JS एंड पुट इट ओवर हियर. यहाँ पे कुछ वी कैन नॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम दिस सेल, ओके, बिकॉज वो एम्प्टी है. सो एक ही सेल आपके पास है जिसमें से आप कुछ वैल्यू निकाल सकते हो. सो यू कैन टेक आउट सम यूनिट्स फ्रॉम JS एंड पुट इट ओवर हियर. सो इफ आई टेक आउट 1 यूनिट फ्रॉम JS एंड पुट इट इन JP, तो यहाँ पे फिर 99 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. ओके, एंड मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी 19 रुपीज से. इंस्टेड 1, इफ आई टेक आउट 10 यूनिट्स, यहाँ से मैं 10 यूनिट निकालता हूँ और यहाँ पे 10 डालूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 हो जाएगी और यहाँ पे 10 हो जाएगा. सो माय कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 190 रुपीज. ओके, नाउ द क्वेश्चन arises, how many units you should take out from JS and put it into JP. ओके, कितने डालोगे? जितने ज्यादा आप यहाँ से निकालोगे एंड जितने ज्यादा इस सेल में डालोगे, उतना ज्यादा आपका कॉस्ट कम होगा. ओके, सो ऑब्वियसली you will try to shift maximum number of units to the home cell. इस सेल को हम क्या बोलेंगे? We'll call this as a home cell. जो सेल हमने सिलेक्ट किया है इम्प्रूवमेंट के लिए, we'll call this cell as a home cell. So we'll try to shift maximum possible units into the home cell. Fine. अब मैक्सिमम कैसे डिसाइड करेंगे? सिर्फ इसके बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते. See, अगर मैं यहाँ से 100 निकालता हूँ, राइट, तो मेरा ये टोटल गड़बड़ा जाएगा. इफ आई शिफ्ट ऑल 100 यूनिट्स फ्रॉम JS टू JP, मेरा कॉलम टोटल फिर 50 हो जाएगा. ओके, सो मुझे ये भी चेक करना है. सी, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों डाला? बिकॉज आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर. अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ तो आई हैव टू सबट्रैक्ट सेम नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम दिस सेल. नाउ इफ आई सबट्रैक्ट सम यूनिट्स फ्रॉम दिस सेल, मुझे कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू balance the column demand. Okay, now here column demand is 150. So in order to balance this column demand, I have to add same number of units over here. मतलब suppose मैं 100 यहाँ पे shift करता हूँ, तो I have to subtract 100 from this cell. In order to balance the demand, column demand, I have to add 100 into this cell. Okay, so I'll put plus sign over here. Again, अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 150 प्लस 100 प्लस 150, ये हो जाएगा 400. फिर ये मेरा डिस्टर्ब हो गया पूरा. ओके, नाउ अगेन टू बैलेंस द रो कैपेसिटी, आई विल हैव टू सबट्रैक्ट 100 आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस. अब दोनों में से कहाँ पर करूंगा मैं? अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट करता हूँ तो फिर ये कॉलम मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑल अदर आर एम्प्टी सेल. सो द ओनली चॉइस लेफ्ट विथ मी इज दिस वन. Okay, so I'll subtract same number of units from this cell. And यहाँ पे मैंने already add किए थे, तो ये column भी automatically balance हो जाएगा. Fine. So if you want to add something into home cell, तो आपको एक ऐसा closed loop बनना चाहिए वहाँ पे. Okay, मतलब यहाँ पे addition करोगे तो फिर next cell में आपको subtraction करना है, then addition करना है, then subtraction करना है. Okay, so what is next step then? Once you identify the entering cell,
वहां से आपको क्लोज लूप ड्रॉ करना है यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस ओनली. नाउ व्हाई हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट रो एडजस्टमेंट. ओके, मतलब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मुझे यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है. So this represent row adjustment in order to balance the row capacity. Okay. अगर मैं यहाँ पे subtract करता हूँ तो मुझे कॉलम बैलेंस करने के लिए वर्टिकल अरेंजमेंट करना है. So I'll draw a vertical line like this. Okay. Again इसके बाद मैं एक horizontal adjustment करूंगा in order to balance the row capacity. Okay. And ये ऊपर मैंने already add किया है तो add subtract वो कॉलम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. फाइन. अब देखो यहाँ पे नाउ वी हैव टू सेल्स विथ नेगेटिव साइन. कैन आई शिफ्ट 150 ओवर हियर? 150 मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इफ आई शिफ्ट 150 ओवर हियर, यहाँ पे तो 150 एडिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. बट यू हैव टू टेक आउट 150 फ्रॉम दिस सेल, बट हियर वी हैव ओनली 100 अवेलेबल, सो यू कैन नॉट टेक आउट मोर देन 100 फ्रॉम दिस सेल. So maximum allowable transfer कितना होगा? 100 units. You cannot transfer more than 100 units from or you cannot transfer more than 100 units to the home cell. यहाँ पे maximum कितना transfer हो सकता है? 100. See, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया, अभी डाले नहीं है सिर्फ. That is why I have purposely used yellow sign. Okay, 100 I can put over here. Now if I put 100, मुझे यहाँ पे same number I have to subtract from this cell. So 100 minus 100, ये हो जाएगा 0. 100 plus 50, this would be 150, and 150 minus 100 would be 50. Okay, so मेरा solution क्या हो जाएगा? Improved solution ये हो जाएगा, right? So यहाँ पे 100 minus 100 0 हो गया, तो this cell became empty now. Okay, यहाँ पे 100 मेरे move हो गए. यहाँ पे 150 was there, fine. 150 minus 100 is 50, so यहाँ पे 50 बचे और यहाँ पे 151 के. Okay, now if you calculate the cost, you will find that the cost is reduced to 9,600. See, previous cost was 11,500. Okay, अभी एक आप चार्ट बनाओ, previous cost 11,500. Okay, यहाँ पे देखो DIJ value of this cell was minus 19 और यहाँ पे हमने कितने डाले हैं? 100. तो मेरी टोटल कॉस्ट कितने से रिड्यूस होनी चाहिए थी? 100 into 19, that is 1900. And see, you can verify the cost is reduced by 1900 rupees. Okay, so ये हो गया एक iteration. Okay, now the solution is the previous solution. For previous solution, total cost was 11,500, and in this solution, the cost is rupees 9,600. It means that the solution is improved. Okay, in fact, it is improved significantly. एक ही स्टेप में हमने कॉस्ट कितना कम किया? 1900 से कॉस्ट कम किया, right? Now, the question arises: is this an optimum solution? देखो, मोडी मेथड का एक इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने सॉल्यूशन को इंप्रूव किया है, right? Now, this solution may or may not be optimum. इससे भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, right? So what we'll do, we'll again put this solution into modified distribution algorithm. उसी same algorithm will again apply on the improved solution. Okay, जैसे गन्ने का रस का निकालने वाला क्या करता है? एक बार गन्ना डाला, वहां से बाहर निकाला, फिर से वो अंदर डाल रहा है. Okay, and he will continue the process until पूरा जूस एक्सट्रैक्ट ना हो जाए. Okay, similarly, what we'll do, हम इनिशियल सॉल्यूशन को, इनफैक्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को पहले मोडी प्रोसेस में डालेंगे, will improve the solution. Again, we'll put improved solution into the process. Again, we'll refine the solution, and we go on refining until we get an optimum solution. Okay, प्रोसेस समझ में आ गई? अभी सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है, right? Now the current solution is 9,600. Okay, so what is first step? Check whether the improved solution is IBFS or not. Number of allocated cells should be equals to m plus n minus 1. M plus n minus 1 is 6, and number of allocated cells is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay,
So if it is IBFS, then we can apply Modi method. Okay. अब Modi method के लिए क्या करना है हमें? For allocated cells, we will find row values, that is U1, U2, U3, and column values V1, V2, V3, and V4. Okay. Remember, now we are into second iteration. पहला iteration हो गया, हमने पहले iteration में solution को improve किया from 11,500 to 9,600, right? अब हम फिर से modified distribution method apply करेंगे. Okay. So let's suppose that U1 value is 0. Okay. अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है. See, अब यहाँ पे U1 मैंने 0 एज्यूम किया. अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? In first row, this is the allocated cell. So the equation corresponding to this cell is 3 equals to U1 plus V3. Correct? Corresponding column value है मेरी V3 and row value है U1. So U1 plus V3 should be equals to 3. That is Cij value. Fine. I'm assuming that U1 equal to 0. So if I put U1 equal to 0 in that equation, I'll get value of V3. Okay. So यहाँ पे मैं V3 लिखूंगा. Now once I get value of V3, then I can find values of the hello, कोई doubt है? सर बेसिकली हम वो जो पहले का प्रोसेस था U1, V1 वगैरह सब वापस करेंगे. वही ना मैं बोल रही, अभी ये सेकेंड इटरेशन है ना. Okay. देखो पहले हमने एकदम फ्रेश गन्ना वहां पे डाला प्रोसेस में. ओके. पहले इटरेशन में थोड़ा सा जूस निकला. ओके. फाइन. मतलब 1900 हमारा कॉस्ट कम हो गया फर्स्ट इटरेशन में. अब हम क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट निकला है उसको फिर से अंदर डाल रहे हैं प्रोसेस में. मतलब सेम प्रोसेस हम अभी रिपीट कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे क्या आ गया, U1 आ गया 0. U1 मैंने 0 लिया. सो विद द हेल्प ऑफ U1 आई कैन ऑब्टेन वैल्यू ऑफ V3. V3 मिल गया तो V3 की हेल्प से मैं ये दो वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एलोकेटेड सेल कौन से इसमें SP एंड TP. ओके. तो U2 plus V3 should be equals to 18. So it gives me the value of U2 as 15. Similarly, इसकी वैल्यू निकलेगी मेरी 12. Fine. Similarly, I'll obtain the values of V1, V2 and V3, V4. Correct? अब ये values निकालने के बाद I'll calculate the opportunity cost for non-allocated cell. इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, 19 minus sum of U1 plus V1. So U1 plus V1 is 0. 19 minus 0 is 19. इस सेल के लिए क्या होगा, 7 minus 0 plus 6. Okay. So 7 minus 6, that is 1. Similarly, I'll obtain Dij value for Jm, then for Ts, then for Tn, and इसके लिए बचा है Sm. Okay. Now here the Dij value of this cell is positive, that is 19. Js के लिए 19 हो गया. इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा यूनिट तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज Dij वैल्यू इज पॉजिटिव. सो इफ आई पुट सम यूनिट्स ओवर हियर, माय टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल इंक्रीज. सिमिलरली, इफ आई पुट सम यूनिट्स इन Jn, my total cost will increase. If I put some units in Jm, my cost will increase at the rate of 11 per unit. Okay. So we are actually interested in a cell, in cells with negative opportunity cost, because negative का indication क्या है कि cost of transportation can be reduced. Okay. So negative Dij value indicate that there is a scope of improvement. Okay. So यहाँ पे 3 cell है. Here we have 3 cells with negative Dij value, that is Ts, Tn and Sm. Okay. With respective Dij values -1, -4 and -19. Okay. Now here cell Sm is offering maximum rate of
decrement in the total cost, that is 19 per unit. Okay, so obviously preference is sale को जाएगा. Fine. So ये cell SM is selected for allocation or for improvement. Now cell improvement क्या है, तो फिर once cell is selected, then we'll do row manipulation and column manipulation. So यहाँ पे मुझे कुछ addition करना है. I want to add something over here. So if I add something over here, then I have to subtract it either from this cell or from this cell or from this cell. Okay. अब हम यहाँ पे कुछ subtract करते हैं. Remember why I have choose this cell only for subtraction. See, if I subtract from this cell, फिर मुझे column adjustment के लिए दूसरा cell है ही नहीं यहाँ पे. Okay. Remember, addition subtraction जो भी करना है, उसके पहले आपको क्या करना है? Draw a closed loop. Closed loop using horizontal and vertical lines. Okay. And आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है. While drawing the closed loop, you have to use horizontal and vertical lines only, because horizontal line represents row adjustment and vertical line represents column adjustment. And next thing you have to remember is you can take a 90-degree turn either to the left side or to the right side from allocated cells. देखो कहीं से भी नहीं कर सकते. यहाँ पे अगर आप सीधा जाओगे, suppose if I extend this line till SS, ओके, तो यहाँ से मैं 90 डिग्री टर्न तो ले लूंगा, बट फिर रिटर्न आने के लिए क्लोज लूप मतलब आपने जहाँ पे स्टार्ट किया है वहीं पे रिटर्न आना है. सी, इफ आई टेक 90 डिग्री टर्न इन दिस डायरेक्शन, तो मैं रिटर्न नहीं आ सकता, बिकॉज हियर वी डोंट हैव एन एलोकेटेड सेल. सिमिलरली इफ आई टेक 90 डिग्री टर्न इन दिस डायरेक्शन, मैं वापस नहीं आ सकता यहाँ पे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है. ओके, दिस इज माई होम सेल. ओके, सो ऑप्शन क्या बचा है मेरा? सिमिलरली ये भी ऑप्शन वर्कआउट नहीं करेगा. ओके, अगर मैं 90 डिग्री टर्न यहाँ से यहाँ ऊपर जाता हूँ तो मैं बाहर चला जाऊंगा, यहाँ पे सीधा बाहर चला जाऊंगा. हियर ये ऑप्शन है, आई कैन टेक राइट टर्न इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे जाऊंगा तो मैं रिटर्न अगेन नहीं आ सकता. तो दिस इज द ओनली ऑप्शन. ओके, एंड see while drawing a closed loop, don't be afraid that मेरा closed loop correct है या नहीं. Okay, क्योंकि once if you check the basic feasibility of the solution, then there will be one and only one loop. एक ही loop बनेगा. Okay, तो वहाँ पे correct या wrong का कोई सवाल ही नहीं आता. अगर loop बना है तो वो correct ही होगा. Okay, so एक ही loop बन पाएगा. जैसे इस केस में ये loop बना है, राइट? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होम सेल. व्हाट इज होम सेल? SM इज अ होम सेल. तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम होम सेल एंड ऐसा क्लोज लूप कंप्लीट किया. अब क्या करना है आपको? स्टार्टिंग फ्रॉम होम सेल, असाइन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन. आई पुट प्लस साइन ओवर हियर, प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द लूप. तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, देन प्लस माइनस. मतलब क्या करना है आपको? जहाँ पे प्लस है वहां पे एडिशन करना है, एंड जहाँ पे माइनस है वहां पे सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन arises, हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी शिफ्टेड टू द होम सेल? होम सेल में कितना डाल सकते हैं? ओके, मैक्सिमम 50, बिकॉज माइनस में ये दो है. ओके, अगर मैं 50 से ऊपर डालता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा. ओके, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो आई कैन ट्रांसफर maximum 50 units to the home cell. So यहाँ पे 50 डालोगा तो this would be 50 minus 50, that is 0. फिर ये empty हो जाएगा. This will be 50 plus 50, that is 100, and 150 minus 50 is 100. Okay, and cost मेरी कितनी से reduce होगी? See, rate of decrement is 19 per unit, and if I am putting 50 units over here, then 19 into 50 कितना हो जाएगा? 550 plus 450, 950. So my cost should reduce by 950. See, before first iteration, cost was 11,500. After first iteration, it was reduced to 9,600. तो अब क्या होगा? See, टोटल कॉस्ट मेरा कितने से कम हो गया? 950 रुपीज से. नाउ द इम्प्रूव्ड कॉस्ट इज
8,650. Okay, previous cost was 9,600, right? अब यहाँ पे मेरे 2 iterations complete हो गए. Okay, now we'll go for third iteration. Same process repeat करना है. UI values are 0, -4, 12, then 19, 25, 3, 10, and Dij values are now 0, -18, 11, -19, then -20, -23. See, the most negative Dij value is for the cell Tn. Okay, अब आपको थोड़ा सा ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा होगा. Why? Because we are actually doing multiple iterations. Okay, अब ये मल्टीपल इटरेशन क्यों आए? बिकॉज वी हैव ऑब्टेन इनिशियल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. अगर हमने फर्स्ट सॉल्यूशन ही वैम से निकाला होगा तो वी वुड हैव रीच्ड ऑप्टिमैलिटी विद इन वन स्टेप, और most of the cases VAM itself gives optimum solution. Okay, that is why I always insist to obtain initial solution by VAM. Okay, see, let's complete this problem. Okay. Now the most negative Dij value over here is -23. That is for cell Tn. So for third iteration, home cell is cell Tn. Okay, so वहां से हम फिर closed loop निकालेंगे. This is the closed loop. We'll add some, we want to add some units over here, so we put plus sign over here, minus here, plus here, minus here. Okay, now minus में अभी मेरे पास 2 सेल है. Okay, and दोनों के values 100 है. It means that we can shift 100 units to the home cell. Okay, तो ये आ जाएगा. Now Dij value was -23 एंड उसमें हमने कितने डाले अभी 100. सो मेरी कॉस्ट कितनी से रिड्यूस होनी चाहिए? माय कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 2300. ओके, सी अब ये सॉल्यूशन प्रीवियस कॉस्ट वाज 8650 एंड नाउ द रिड्यूस्ड कॉस्ट इज 6350. इट इज रिड्यूस्ड बाय 2300. ओके, सो अब इस आफ्टर थर्ड इटरेशन cost is reduced considerably. Directly 2300 से कम हो गया. Okay, remember we have started from 11,500. Okay, almost half तक आ गए हम. Fine. Now this solution again may or may not be optimum. Okay, so to test optimality, we'll again put this solution into Modi process. Okay, but the requirement for Modi process is this input solution should be initial basic feasible solution. That is, the number of allocated cells must be equals to m plus n minus 1. Okay, अब previous iterations में हमने देखा था कि solution input solution was initial basic feasible solution. Now here the number of allocated cells is 5. Okay, and m plus n minus 1 is 6. Right, so this solution is not an initial basic feasible solution. Right, so Modi method cannot be applied to this solution directly. This is called as a degeneracy in transportation problem. Okay, now there are 2 types of degeneracies. एक तो ये आ गए, this type of degeneracy is called as degeneracy at intermediate steps. Okay, and the first type of degeneracy, this is actually second type of degeneracy, and first type of degeneracy is degeneracy at initial step. मतलब जो हम initial solution निकालते हैं either matrix minima से या VAM से या north west corner से, so that solution, if that solution itself is a degenerate, then that is called as degeneracy at intermediate steps. Okay, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ 2 टाइप के डिजेनरेसी है, दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है. फाइन. नाउ इफ डिजेनरेसी इज अकर्ड एट इनिशियल स्टेज,
तो क्या करेंगे हम? टू रिजॉल्व दैट degeneracy will assign a negligible quantity epsilon to any empty cell. Okay. And will consider that cell as an allocated cell. अब क्वेश्चन आता है कि कौन से सेल को चूज करना है. तो ऐसा कोई रूल नहीं है. यू कैन असाइन एप्सिलॉन टू एनी सेल. ओके, फाइन. सिर्फ एक केयर लेनी है आपको कि you should be able to find the values of ui and vj uniquely. ऐसे सेल को एप्सिलॉन असाइन करो for which you can be able to find the values of ui and vj uniquely. Okay, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डिजेनरेसी. अब सेकेंड टाइप ऑफ डिजेनरेसी मतलब जो अभी इस प्रॉब्लम में हमें आ रही है. ओके, नाउ सी this is the previous solution. Now if you compare this solution with previous solution, current solution with previous solution, यहाँ पे दो सेल Sn and cell Tm at a time vacant हो गए. Okay, हमने क्या किया? दो सेल वैकेंट किए और एक नया सेल क्रिएट किया. That is why the number of allocated cells reduced to 5. Okay, so to resolve this type of degeneracy, what we'll do? Will assign epsilon to any one of these two cells. Okay, so to resolve second type of degeneracy, will assign epsilon to any one cell which became vacant recently. Okay, अब recently कौन vacant हुआ है? Sn and Tm. These two cells became vacant recently. So what we'll do? We'll assign epsilon either to Tm cell or to Sn cell. Okay, suppose I assign say epsilon to Tm cell. Okay, now the solution became initial basic feasible solution because by considering this cell as allocated cell, now we have 6 allocated cells. Remember, the value of epsilon is negligible. This is negligible quantity. Okay, means what? It is almost equivalent to 0. Fine. Now again we calculate, again we'll apply the same procedure. मतलब क्या करना है? पहले ui वैल्यू निकालने, then vi वैल्यू निकालने है. Okay, now these are new ui and vj values, 0, -4, 12, etc. Okay, dij values are 0, 5, 11, 23, -1, -20. Okay, so most negative is -20. So from this we'll draw a closed loop, assign plus minus sign alternatively to the corner of the closed loop. Okay, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है. Okay, now because epsilon is a negligible quantity and इस सेल को मेरे नेगेटिव साइन आ गया, so I can move maximum epsilon number of units to the home cell. Okay, so यहाँ पे हो जाएगा 0 plus epsilon, that is epsilon. 150 minus epsilon is 150 because epsilon is a negligible quantity. Similarly, 150 plus epsilon is 150. Epsilon minus epsilon is 0. So ये सेल हो जाएगा vacant. Epsilon आपका शिफ्ट हो जाएगा in cell TS. Okay. Now because the rate of increment was I think 20. No? Yes, the rate of decrement was 20, but we have moved negligible quantity, so 20 into 0 is 0. So cost is not reduced. In previous iteration it was 6350. In this iteration also it is 6350. Okay, so I have improved the solution. Now this solution again may or may not be optimum. फिर से मुझे क्या करना है? I'll repeat same procedure. Again, I'll find UI values. The U1 value is 0, then 16, 12, -1, 2, 3, -10. Okay, and then I'll find Dij value. Dij values are 20, then 5, 31. Okay, 31, 3, -1, then plus 20. The only negative Dij value is -1. That is for cell SP. Okay, so this is my new home cell.
Remember, we are now in 6th iteration. Okay, this is my new home cell. So I'll put plus sign over here. Draw close loop. तो यहाँ पे 150 पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, this plus and minus. Okay, so how many units now I can transfer? 100 units I can transfer. So 100 यहाँ पे हो जाएगा, 0 plus 100 is 100, 100 minus 100 is 0, so this became empty. Epsilon plus 100 is 100, 150 minus 100 is 50. Fine. So this is new solution. Okay. Now again, this improved solution may or may not be optimum. देखो मेरा अभी cost कितना reduce हो गया, 6000, because DIJ value was -1 and 100 units मैंने move किया यहाँ पे. So -1 into 100 is 100. So total cost is reduced by 100 rupees. So previous cost was 6350. Now new cost is 6250. Right? Again, I'll find DIJ values. DIJ value. Okay. Again, I'll find DIJ values. UI and VJ values. UI values are 0, 15, 11. 0, 3, 3, minus 9. DIJ values are plus 19, plus 4, 3, 30, 3, 1, and 20. Now see, all DIJs are positive. Okay, it means that there is no scope of further improvement. क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी यूनिट डाला. If I put some unit in JN, my cost will increase at the rate of 4 per unit. Similarly, in this cell, cost will increase by 30, at the rate of 30 per unit. यहाँ पे rate of increment would be 21. In this cell, it is 3. In cell JS, it would be 19. Okay, मतलब सभी DIJ values positive आ गए. It means that अगर मैं कुछ और इसमें changes करता हूँ, manipulation करता हूँ, my cost will not be reduced. Instead, it will be increased. Okay, so this is my optimum solution. See, अभी मैंने मोदी मेथड के 6 iterations किए. Fine. So after 6 iterations, I arrived at initial solution. Optimum solution. Okay. So process क्या करनी है आपको? What is the? Let's recall the steps. Find initial solution by any method. अच्छा एक काम करते हैं. यहाँ पे कोई difficulty है? I know it is very difficult to find difficulties at this moment. Okay? Unless and until you practice on your own, you will not get difficulties. हाँ, थोड़ा सा नहीं, देखो कंफ्यूजिंग अभी क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशंस हो गए. जब मैं पहला इटरेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको इजी लगा कंपैरेटिवली. ओके, यस सर. प्रोसेस, सेम प्रोसेस मैंने 6 बार रिपीट किया है. कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है. आपको एक प्रोसेस ध्यान में रखना है. ओके, फाइन. एंड दैट प्रोसेस यू हैव टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स. तब तक करना है जब तक all DIJ values are non-negative. Okay, fine. So let's recall the steps. चाहे तो आप लिख सकते हो. पहले क्या करना है? Find initial solution by any method, preferably by WAM. Okay. Second, if the initial solution obtained in step 1 is initial basic feasible solution, मतलब number of allocated cells equals to m plus n minus 1, मतलब solution होता है IBFS. Then you can jump to step number 4. Otherwise, you have to resolve the degeneracy. Now, how to resolve degeneracy? एक negligible quantity epsilon assign करनी है आपको to any empty cell or non-allocated cell, and will consider that cell as allocated cell. Suppose m plus n minus 1 is 6 and आपके पास 4 ही allocated cell है. तो degeneracy resolve करने के लिए you have to assign epsilon to 2 cells. Correct? क्योंकि 6 चाहिए ना allocated cells. Okay. ऐसा situation normally नहीं आता. आपको degeneracy कम गिरेगी by 1 unit. Okay. जैसे m plus n minus 1 is 6, then you will get
5 allocated cells. So in that case, you have to assign epsilon to any one empty cell. Fine. The next step is find out the set of numbers ui and vj for each row and column satisfying the condition ui plus vj equal to cij for each occupied cell. This is very important ना, ये इस वर्ड को अंडरलाइन कर दो. अब ये जो सिस्टम बनेगी ui plus vj equal to cij will solve the system for occupied cells. Non occupied cell के लिए नहीं करना है. Okay. To start with, we assign number 0 to any ui or vj. अब मैंने demonstration purpose के लिए u1 को 0 लिया था, but you can assign you can take u1 equal to 0 or u2 equal to 0 or u3 equal to 0 or v1 0, v2 0, v3 0, v4 0, कुछ भी ले सकते हैं. इनफैक्ट 0 की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. ओके. सो लेकिन किसी एक को ही एक की वैल्यू एज्यूम करनी है. ओके. आइदर u1 और u2 और u3 और v1 और v2 और v3 और v4, किसी एक की वैल्यू 0 लेके आपको पूरा सिस्टम सॉल्व करना है. फाइन. Okay, now yes, once you obtain all ui and vj values, बाद में आपको क्या करना है? For unoccupied cell, okay, for unoccupied cell find dij values. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर dij values आपके नॉन नेगेटिव है मतलब सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है. फाइन. के बाद क्या करना है? इफ द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, मतलब क्या? व्हेन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, कैन यू आंसर? जब कोई नेगेटिव यूनिट्स नहीं आए अंदर. dij वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं है. ऑल dij's आर नॉन नेगेटिव. कभी कभी 0 भी हो सकता है. dij वैल्यू मे बी 0. दैट इज व्हाई मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव. फाइन. dij वैल्यू मे बी 0. तो उसका क्या सिग्निफिकेंस, व्हाट डज इट सिग्निफाई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट dij, रिमेंबर dij वैल्यू मे बी 0. ओके. हमें कैसा चाहिए ऑप्टिमैलिटी के लिए? ऑल dij वैल्यूज शुड बी आइदर 0 और पॉजिटिव. ओके. 0 dij वैल्यू रेयर केस है, बट वो कभी कभी हो सकता है. फाइन. अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो हम प्रोसेस वहीं पे स्टॉप करेंगे. एल्स अदरवाइज क्या करेंगे? हम विल सिलेक्ट अ होम सेल, विल सिलेक्ट अ सेल हैविंग मोस्ट नेगेटिव dij वैल्यू एंड वी कॉल इट एज होम सेल. ओके. एंड उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो पता है आपको. ओके. assign maximum units, draw a closed loop from the home cell, okay, using horizontal and vertical lines only. Okay. Assign plus sign to the home cell. Starting from home cell, assign plus minus sign alternatively to the corner of the closed loop. Okay. फिर जहां पे प्लस साइन है उस सेल में आपको एडिशन करना है, जहां पे माइनस साइन है उस सेल में आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. सो इस मेथड से आपको सॉल्यूशन को इंप्रूव करना है. फाइन. सो दिस स्टेप will yield a better solution. To repeat steps 3 to 7 until the condition of optimality is satisfied. In fact, 3 to 8 होना चाहिए. Repeat steps 3 to 8 until the condition of optimality is satisfied. Okay. So this is the algorithm of modified distribution method. अब हम क्या करेंगे? सेम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. आप एक काम करो, इसका सॉल्यूशन निकालो, इनिशियल सॉल्यूशन बाय VAM. For your convenience, I'll display the equation. Find initial solution. हाँ, अभी solution टाइम है ना अभी? क्या हो गया? अच्छा. 15 मिनट. ओके ठीक है. क्या करेंगे हम? What you do? फिर आप प्रोसेस समझ में आ जाएगी. ओके ठीक है. Find initial solution by VAM and try to optimize it using modified distribution method. Okay.
अगर नहीं हो पाया तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. फाइन. Sure, sir. So I have just one doubt, sir. हाँ. अगर कोई मतलब dij वैल्यू नेगेटिव है पर लूप नहीं बनता है तो then what how about that? लूप क्या? अगर dij वैल्यू नेगेटिव है हाँ. और लूप नहीं बन रहा है, ऐसा Loop सिचुएशन हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम वो कंडीशन चेक करते हैं IBFS. नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स शुड बी इक्वल्स टू m plus n minus 1. ओके. हाँ, अगर तुमने कंडीशन चेक नहीं की एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट, इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ लूप, तो बनेगा नहीं. करेक्ट. इफ द कंडीशन of feasibility is satisfied, basic feasibility is satisfied, then आपका किसी भी हालत में लूप बनेगा ही बनेगा. ओके. एंड दैट टू एक ही लूप बनेगा, मल्टीपल लूप्स नहीं बनेंगे. ओके. यूनिक लूप होता है. फाइन. एंड अभी जितने भी लूप बने वो फॉर्चुनेटली रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गए थे. नेसेसरी नहीं है रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएंगे. मे बी ऐसे क्रॉसिंग हो जाएगा, दो रेक्टेंगल बनेंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए. राइट. तो जितना आप एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना आपको वो आइडिया आ जाएगा. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपका रेक्टेंगल ही बनेगा, बट नेसेसरी नहीं है रेक्टेंगल ही हो. ठीक है. एग्जांपल कॉपी किया? यस सर. ठीक है. वो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा. ट्राई टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना, बिकॉज आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्टी आएगी. सो दैट आई विल बी एबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. फाइन. Sure, sir. So we'll meet on Monday, right? Monday 10 a.m. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So while joining next class, you should have a solution of this problem, initial solution by WAM, and at least you should give a try to find optimum solution. आ Yes, जाएगा. वीडियो देख देख के देखो कहाँ पे क्या स्टेप फॉलो करने हैं. ठीक है. Okay, Yes, sir. sir. ओके. Thank you, sir.